बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्लेम एटोमाइजेशन। तो फ्लेम एटोमाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग इसको एक नए अंदाज में पढ़ेंगे सो दैट कि हमारा टाइम भी इसमें बच जाए और हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाए। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि ये जो पैटर्न है टीचिंग का हमने स्पेसिफिकली इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जो हमारा एग्जाम है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स है उनमें इस तरह के जो टॉपिक होंगे, फ्लेम एटोमाइजेशन हो या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, तो इसमें इस तरह का जो ये जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया या जितने भी टॉपिक्स ऑनलाइन है वो पूरे they have been prepared as per the objective type pattern. तो इसको हम पढ़ेंगे in order to understand the flame atomization. So what we'll do, we'll try to understand first its basics or basic definition number 1. इसमें second point पढ़ेंगे इसको understand करने के लिए, that is fuels and oxidants. Fuels and oxidants. थर्ड पॉइंट जो इसमें हम पढ़ेंगे दैट इज फ्लेम स्ट्रक्चर। फ्लेम स्ट्रक्चर एंड जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट विल बी द परफॉर्मेंस, यानी व्हाट इज द benefit and what are the drawbacks of the flame atomization method contrary to other methods. So that can be called as the performance of the method. तो इन 4 points के अंदर we'll try to sum up our topic, that is the flame atomization. Before we'll go to, we'll start with the number 1, that's the basics. So basics में, so in our basics we'll try to understand. In our basics we'll try to understand the बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लेम एटोमाइजेशन। तो फ्लेम एटोमाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, एज पर एज द सैंपल इज कंसर्न, हमें जिस सैंपल को एनालाइज करना होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में या एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हम लोग वी आर एक्चुअली एनालाइजिंग द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल and we are also trying to get the concentration of those atoms in the sample, not molecules. So we need atoms in the free state. So in the flame atomization, what we do, our aim is to produce atoms in gaseous state, produce free atoms in the gaseous state. कहाँ से प्रोड्यूस करने हैं? फ्रॉम द मॉलिक्यूल। सैंपल हमें जानते हैं फ्री एटम्स तो होते नहीं यूजुअली, तो दे विल द सैंपल्स विल हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्म। सो फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, so what we do, we need to have the free atoms in the gaseous state. So this conversion or this process, this comes under the flame atomization. तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, we'll go slightly back. हमने कहा था पिछले लेक्चर्स में कि जो हमारा सैंपल है that will dissolve in a solvent. So when we dissolve the sample in a solvent, so we'll get a solution, a liquid sample, or we'll get a liquid sample, sample that is dissolved, liquid sample. Liquid sample को then we will spray this, we'll make aerosol out of this. इसको हम convert करेंगे into fine mist, फाइन ड्रॉपलेट्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, अब इसको हम एरोसोल भी कहते हैं। और ये प्रोसेस हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूबिलाइजर। सो वंस वी हैव न्यूबिलाइजर, once nebulizer produces our fine mist or the sample in the form of minute droplets, so they will be sprayed towards the flame. एज फ्लेम जो है इसमें बहुत टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, अप टू समटाइम्स 2000, depending on which type of material we use. Accordingly there will be flame temperature. So that flame will actually break down this mist or break down this spray of molecules into the atoms. So we have now atoms present here in shortcut. So this phenomena
of converting the molecule, converting our sample molecules in the sample into the free atoms, gaseous atoms, which we will analyze with the help of different radiations. So this is basically called as the flame atomization. And this is one of the continuous type of atomization methods. Continuous means this process continuously goes on during the process of chemical analysis. यानी जब हम किसी भी sample को analyze करते हैं, this process continuously goes on. The solution is converted into this, and then we have nebulization, and then we have finally the atomization. So this is all about the basics of the flame atomization. Means atoms को produce करना in the gaseous state from the sample, ठीक, with the help of the flame. So this is called as the flame atomization. So this is our point number, the basics. Now अब हमने कहा था यहाँ पे हमें flame की जरूरत है यहाँ पे. That flame will provide the temperature. अब ये flame कैसे generate करेंगे? We know that in order to produce this flame, हमें ये flame कैसे बनती है? We need the fuels. और fuels कैसे हम heat generate करेंगे? Flame वहाँ generate करेंगे? We need the oxidizing oxidants. हम जानते हैं for burning, oxidation is important. So in order to produce this flame, we need fuels and we need oxidants which can actually oxidize the fuels. We know that it's some sort of burning process where with the help of oxygen the fuel gets converted to carbon dioxide and so on, and then meanwhile the heat is produced. So we need the fuels and oxidants. Number 2 point. So the fuel, as far as the second topic is concerned, that is the fuel and the oxidants. So under the heading number 2, fuels and oxidants, कौन सा इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा फ्यूल हमें चाहिए, कौन से फ्यूल से हमें कौन सा ऑक्सीडेंट मिला है उसके साथ, so that we'll get a particular temperature. उसके लिए we'll simply make a table. So we'll keep here oxidant, which oxidizing agent we'll use, or what is the source of oxidation, oxidant, and then the next column will use which type of fuel in order to generate that flame, and then how much temperature will get out of it. That temperature will break down the molecules after nebulization into the free atoms. So we have the temperature, how much temperature will generate. So we'll start it like this. So we'll keep oxygen as the oxidant that can oxidize the sample, and our fuel is natural gas. So natural gas plus oxygen supply plus oxygen, so that will act as a source for the production of flame. इसमें जो हमें temperature मिलता है, that is around 2700 to 2800, that is 2700 degrees Celsius. That's a huge temperature. This is one way of generating this much temperature from the flame. That flame will break the molecules into the atoms. Number 1. दूसरा possibility इसमें ये भी है जो experiments में देखा गया, that is you use oxygen as a source for the oxidant, for the oxidation, and then instead of fuel using natural gas we'll use hydrogen. So with this combination we can achieve the temperature which is around just slightly less than this, 2500 to 2700 approximately. So ये इससे कम टेम्परेचर मिलता है. इस तरह से तीसरा फ्यूल प्लस ऑक्सीडेंट सिस्टम जो हम यूज करेंगे, दैट इज विल यूज ऑक्सीजन प्लस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C triple bond CH. This is called as acetylene oxygen, that will act as the fuel and oxidant, that is generates the high temperature. तो ये जो combination है, that generates the highest temperature possible. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, एग्जाम में, दैट विच फ्यूल प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन विल यूज एंड व्हाट इज द पॉसिबल टेम्परेचर. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस तरह से वी कैन यूज, instead of oxygen we'll use directly air. So we know that contains oxygen, so we can use fourth possible, we can use air instead of oxygen as the source for oxidation or as the oxidant, plus natural gas जो हमने ऊपर रखा था, natural gas.
ये भी एक पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं. तो इसी तरीके से वी कैन यूज दिस इज एयर प्लस हाइड्रोजन. So air plus hydrogen gas, this is also one possible way. Likely we can use the sixth possible, that is air plus acetylene. जैसे हमने यहाँ पे, तो मैं इन तीनों को कॉपी कर रहा हूँ सेम, just I'm changing the oxidant. So I'm using air supply straightforward here. So that is acetylene. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, I'm writing acetylene. So C triple bond C H, that's acetylene. So I'm writing here acetylene. So this is fourth way, and one more possible combination is, that is nitrous oxide, N2O, nitrous oxide plus acetylene. तो इनमें I will write now the temperature. इसमें ज़्यादा temperatures तो generate होते नहीं. It is compared to above ones, they are less. It's around 1900 approximately. It's 2100 to 2400 degrees Celsius, and the air acetylene is 2100 2400. Sorry, it is 200, it is 2400. And then nitrous oxide acetylene is also quite high. तो ये possible जो fuel and oxidant combinations possible है, they are used to generate the flame. इसमें सबसे important जो point है ये one, that is oxygen and acetylene generates this much. And आप हम nitrous oxide भी हम याद रख सकते हैं कि different सा combination है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है. Temperature is quite high, 2600 around. So ये हो गया हमारा fuel and oxidant. So this is topic number 1, the basics of the atomization, the fuels and oxidant use, and third point, that is the flame structure. So we'll go to the flame structure now. तो इसका मतलब है, in the flame atomization we have basically, somehow we have to generate that flame. Somehow, by using the fuel plus oxidant supply. So we have to generate the flame. Flame जो होती है, that is, it has 3 regions. ठीक, एक ये region हो गया, this is one region. Second region is above it, and the third one is the outer region. So the flame has 3 regions. So this inner one is called as a primary combustion zone, this inner one. So it's called as a primary combustion zone. Then this middle one, this one, this is your internal zone. Internal zone. And then this outer one, it's called as the secondary combustion zone. So this is primary, this is secondary combustion zone. तो फ्लेम में 3 जो है zones होते हैं. Or as far as these 3 zones is concerned, the middle one, that is the internal zone, this is the most important internal zone. Okay, so ये internal zone है, ये बहुत important है objective exam के लिए. This is the hottest one. So this is actually plays an important role in the atomization. It breaks the molecule into the atoms. So this is the hottest zone. Fine. तो अब कुछ फैक्टर्स है जिनसे हम इन जोन्स का साइज जो है दैट वी कैन वेरी. यानी ये जोन कितना मोटा होगा, इसकी थिकनेस कितनी सेंटीमीटर्स होगी इन जोन्स की, इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अपीयरेंस ऑफ जोन का कलर कैसा है या कितनी ब्रॉड है, सो ये भी दैट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. इन नटशेल
we should say that the size, ये बहुत ही important है, size and appearance of zones. So that depends on, number one, it depends on fuel to the oxidant ratio. यानी इसका फ्यूल का कितना अमाउंट हम यूज करते हैं, कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, ऑक्सीजन का कितना अमाउंट, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज कर सकते हैं फॉर बर्निंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल. सो इट डिपेंड्स ऑन फ्यूल टू द ऑक्सीजन रेशियो, नंबर वन. सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ, तो इस पर भी डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट वी आर यूजिंग. कौन सा फ्यूल, कौन सा ऑक्सीडेंट यूज करेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग द फ्लेम, what the ratio of this, that will decide as the size of these zones and the appearance of the zones, ये broad है या उनका color कैसा है. So that depends on these factors. For example, just put up an important example in order to justify our case that so put an example. For example, if we use hydrocarbons as fuel, so if we use hydrocarbon as fuel and then we use oxidant as oxygen, so we'll use this combination for generating the flame. तो जो प्राइमरी जोन होगी, इससे जो प्राइमरी जोन जनरेट होगी इंटरनल वाली, so that primary zone, that will be bluish in color. So that will be bluish, that will give us the bluish luminescence or bluish bright type flame from the primary zone. If you use this combination, hydrocarbons as fuel and oxidant as oxygen. इस केस में जो आपकी इंटरनल जोन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है, जो हॉट जोन है, दैट इंटरनल जोन विल बी नैरो, यानी इसकी थिकनेस बहुत कम होगी. ठीक है. Now, contrary to this, if we use acetylene, C triple bond CH, this acetylene plus oxygen as fuel plus oxidant combination, जो internal zone है, जो ये important internal zone है, that is the main important one. Now this internal zone, it will become thick, यानी इसकी जो width है, that will increase. So your internal zone in flame, that will become thick up to many centimeters, So in general, the size and appearance of the zones depends on fuel to the oxidant ratio and the type of fuel and the oxidant used. So this is an important nutshell about the flame structure. Ab last point, that's the performance. So मैंने कोशिश की है यहाँ पे कि somehow will not unnecessarily put unnecessarily content here and then so that students will get a lot of time involved there. Straightforward, जहाँ पे हमें क्वेश्चन आ सकता है और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जनरेट हो. परफॉर्मेंस मीन्स इसका एडवांटेज क्या है कंपेयर टू अदर्स, या इसका ड्रॉबैक क्या है कंपेयर टू द अदर्स. सो एज पर द परफॉर्मेंस इज कंसर्न, दिस फ्लेम एटोमाइजेशन, it's mainly used when we have the liquid samples, that is you convert the solid into liquid samples. या liquid sample ही available हो आपके environment में, या कहीं पे भी geo sample हो, environment sample हो, liquid sample हो, food sample हो. So it's widely used for the liquid samples, So in liquid samples it has wide applications. Sometimes हमारा solid sample होता है, that has to be dissolved into a liquid, and then so that's all about wide applications. और दूसरा जो डेटा हमें नहीं मिलता है, हम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी हमने एक सैंपल में एक पिंच उठा लिया, उसका हमने देख लिया कौन सा एटम प्रेजेंट है, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है. अगर हम ये चाहे कि इसको दोबारा हम रिप्रोड्यूस करें, वी कैन डू इट टू अ ग्रेटर एक्यूरेसी. सो वी सी दैट द रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल. The results are reproducible. Now, as far as the drawbacks are concerned,
ड्रॉबैक्स में ये है कि सेंसिटिविटी इज लो सेंसिटिविटी मीन्स अगर हम कॉन्सेंट्रेशन लो है तो हमें डेटा नहीं मिल सकता. वी कैनॉट एक्यूरेटली मेजर एट लो कॉन्सेंट्रेशन. दैट्स कॉल्ड लो सेंसिटिविटी. sensitivity. So second point, second drawback is that क्योंकि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है फ्लेम से, जब हम फ्लेम से हीट करते हैं सैंपल को, सो इट कैन फॉर्म द ऑक्साइड्स आल्सो. डिफरेंट मेटल्स के साथ या एयर के साथ मिलकर इट कैन फॉर्म द ऑक्साइड्स. उससे हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा. सो द सैंपल विल बी रिड्यूस्ड. थर्ड, फ्लेम्स दे आल्सो हैव द फ्लक्चुएशन इश्यूज. तो उससे भी डेटा एक्यूरेट नहीं मिलता है. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है इसमें. नाउ आई विल जस्ट सम इट अप द एटॉमिक. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स एंड द मेन things in the atomic flame atomization. So in general, I will say that flame atomization means that we'll convert our sample into the atomic state. So this conversion of our sample, or conversion of sample, I should say, in the molecular form, molecules into the atomic state, or in the atoms in the gaseous form. This involves 3 steps, 1, 2 and 3. Number 1 step, जो हमारा सैंपल था, अगर वो सॉलिड था या जो भी सैंपल था, that we dissolved in some solvent. Fine, so then we have the solution present. ठीक, so that we have dissolved in some solvent. First step में हम फ्लेम पे जब उन एरोसोल्स को ले जाते हैं, या इस सैंपल का फॉग, इस सैंपल के वो जो माइन्यूट पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स जब इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल्स फ्लेम पे आ जाते हैं, तो वहां पे पहला जो वो सॉल्वेंट उसको इवापोरेट करना होता है. सो दैट वी कैन कॉल एज डीसॉल्वेशन. सॉल्वेंट, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट. सो इट डज इज डीसॉल्वेशन. सो इन द फ्लेम एटोमाइजेशन वी हैव डीसॉल्वेशन, नंबर 1. सेकेंड थिंग इज, जैसे सॉल्वेंट हो गया खत्म, उसके बाद जो अपना लिक्विड सैंपल है दैट विल गेट फर्स्ट इवापोरेटेड. सो वी हैव evaporation. That's you convert that sample from liquid state to the gaseous state. And third, in the gaseous state you break down the molecule. Into the atoms. So this can be called as the dissociation. So this is called as dissociation. So in nutshell, flame atomization involves dissolution of the solvent that was used to remove that desolvation, evaporate the sample, and then in the gaseous state dissociate the sample into the atoms. So once we have atoms available, then we can observe the atomic absorption spectra, and then we can get the information about which type of element was present and what was the concentration. So this is all about the flame atomization. This is whole for the day.